दिख रहा है वो देखो। नहीं अभी तो नहीं खुला है। Hi berries, we are going for an evening walk. Just for the clarification, this was the same evening of 26th Jan, that is the Republic Day. I made it into two different videos because this one also got a little long. My friend told me that she wanted to eat something spicy, so we came out. This is the gate number 2, which is the nearest gate to our hostel. And we were looking for shops to eat because as it was Republic Day, majority of the shops were closed. But by looking at it, you can say that this is a proper rural area. There were not much shops when I first came. Right now, it has improved by a little, but not much of a difference because you can find just small shops to eat and cycle repairs, etc. We finally decided to go into one of the uncle's shop in which we earlier used to go, but we were trying to avoid it because the food really doesn't taste good. But when we reached there, we realized that the cooks has changed. By the way, there was this puchka shop in front of it which was not there earlier. I don't know, maybe it is new. So we went in, but the uncle was not there. The uncle that I'm talking about is the owner of this shop and he has multiple businesses, and he told us that he was about to open one more non-veg restaurant because right now we just have one non-veg and this one in which we entered is also vegetarian. So we called him and asked if the shop is open, but he said like it will take one more week. So we decided to order here and we ordered Maggie, but my friend said like she really wants to eat something spicy, so we told them to make it spicy. And after a while uncle arrived and he told us like he will show us where the new restaurant is about to be open, so let's go for the tour. The new restaurant was also just nearby, like a few meters, so uncle said like he will show us the way, so we went behind him. While we were talking to him, my friend asked, "Do you stay with your family?" And he said like he stays alone because his parents are no more and he has only brothers and they are already married. उस दिन साइकिल से ढूंढने आए थे। कब? क्या था? 14 को, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया। जो लगे हैं वो नहीं, बोर्ड नहीं लगाए हैं क्या कुछ? लग रहा है ना। अच्छा। इसी का तो सब अब तो डिजाइनिंग करवाने, अब मेरे को भी समय देना पड़ता है, डिजाइनरों के साथ बैठना पड़ता है, समय भी नहीं मिलता है। He also told us that he has not married and I think he is around 35 plus or maybe near to 40 because he looks very aged. That's why we already assume like he had like kids and wife. This is the new restaurant that is about to be open, but I know it's not that hi-fi, but it's okay because we don't have much of an option here. He opened the lock and even showed us the interior of the kitchen and everything. It was kind of not expected. I thought like maybe he will just show us the place, but he started opening it and also called us in to see how the kitchen will operate and everything. He even showed us the place in which the workers will stay. Oh wow! इतना सारा। कुछ नाम रखे हैं अंकल? मीठू कैफे ये रहेगा और अच्छा। रेस्टोरेंट रहेगा। ये रेस्टोरेंट मैंने अपन इसमें खाना खिलाएंगे, पर वैसे ही रहेगा, वेज नॉन वेज दोनों। अच्छा, अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा अच्छे से बना है ना। तो ये रेंट पे लिया है आपने? हाँ, सब मेरा रेंट पे ही है। आइए आइए अंदर। आइए ना, देखते ना, ये हमारा किचन रहेगा। अच्छा, ठीक है। बढ़िया है। हाँ, तो ये तो घर लग रहा है पूरा। ये अपने स्टाफ लोगों के लिए है सब पूरा। अच्छा, ठीक है। वो अंदर जो काम कर रहे थे वो सब अलग लग रहे थे। सब बाहर से अभी लेके आया हूँ। यहाँ के क्या लोकल लोग ना भाग जाते हैं, तो ये सब मैं बाहर से बुलाया हूँ। विशाखापट्टनम से अभी और भी कल आ जाएंगे पूरे लेडी स्टाफ लोग भी, वेटर वूटर क्या मेरे को सब करना पड़ जाता है ना। फिर सामान उमान भी लाना है इसको, फिर बाद में अपन इसको ओपन। ओ ये रास्ता है उधर? वो अपने उधर से पीछे से जो नहीं रोड आया है, अच्छा, ये वाला रोड है। अच्छा है, आते हैं हम भी फिर। मैं भी बहुत जल्दी इसको चालू करने की कोशिश में लगा हूँ।
हाँ, ये पहला नॉन वेज वाला होगा शायद। हैं? अच्छा सेकंड, वो बंटी की टपरी के बाद ये सेकंड होगा। नॉन वेज वाला है। नॉनवेज वाला। हाँ कैंपस में भी लोग नहीं देते नॉनवेज। हाँ। यहाँ पर कॉफी की सब मशीन सब इसमें मशीन में अपन कॉफी वो करवाएंगे। ये 1 तारीख को मेरे को खोलना था, लेकिन सब पहले वाले जो कुक थे ना बदमाशी करने लग गए। बदमाशी मतलब वो लोग चले गए? हाँ। अच्छा, तभी तो कोई पहचान वाला नहीं दिख रहा था। सब नए नए आ गए। We are now on the way back to the Me Too Cafe, the veg one, because we had already given our order. We talked a lot on the way also, but yeah, I have already told most of the conversations on the voiceover. So we came back and had a Maggie. The Maggie was really tasty, to be honest, because we were not expecting it to be that tasty the way it tasted. The prior chef, I mean the cook, was not really that great, and I'm not going to lie about it. This is the Edmart in which we get everything from socks to vegetables. Like you can get literally anything, and also that uncle gave us free peanut chicky in the name of Republic Day. We are so lazy that we took leave for even just single floor because the Edmart is at the first floor. We also have one post office and one SBI branch on the same floor. Wait, let me show you here. The blue one is the SBI branch and the red one was the post office, and this is the Edmart we are entering. For me, I didn't needed anything from there, so I was just wandering around the food section, but all the chips were of 20 rupees and I eat it just in a go, so I wanted to avoid it, so I just kept it back. 9 रुपए का बस दिखाओ, उसका पिछवाड़ा टूट गया है, देखो। नहीं इसका नहीं, उसका हाँ, इसलिए मैं उसको चेंज की। लेकिन ये लोग सब्जी सी बेचते हैं, देखो डब्बा तक। ये सब, और ये वन टाइम यूज़ वाले सारे हैं भाई। सब यहाँ अम्ब्रेलाज वगैरह है, सारे इनरवेयर है, सैनिटरी पैड्स, सब कुछ। बहुत हल्का पेपर प्लेट है सर, नहीं, क्या है ये? अच्छा है, लेकिन फाइबर नहीं है, बहुत हल्का सा। गर्म सामान रखने से ख़राब हो जाता है ये दिन में। This is our souvenir shop. Sapna was looking for a nail polish and she couldn't find the one that she needed above, so we came down, and this is a souvenir shop, but everything is just so costly here, so we just avoid this shop also. But we started looking around because everything was just so cute but just overpriced. ये हमारे कॉलेज का ATM है, वो सॉरी ब्लिंक हो रहा है। हाँ, ऐसे ही हवा खा के आ सकते ना अंदर हाँ। गर्मी के टाइम का मज़ा आ रहा AC नहीं चल रहा है वो अभी। है। ये ATM है, ये हम हैं क्या, तो हाँ CCTV कैमरा है ऊपर। तभी मुझे बोले मुझे वो वीडियो याद आ गया ना, कौन रॉकेट वाला। हाँ एक लड़का नहीं, आदमी था, वो सिक्योरिटी था, उसके पेट से पूरा इंटेस्टाइन निकल गया, उसके पेट में वो रॉकेट आ गया था। क्या हाँ जी बहुत छोटा है। हाँ ठीक है, प्यारा है। मैं किसी को तो देखी थी लगाए हुए यहाँ पे सेम। ये प्यारा लगता है। 700 वाला खुल गया क्या अंकल? तो वो बोले कि नहीं अभी तो नहीं खुला है। आज रुको पॉज, तुम लोग पॉज, हम लोग अभी स्पेशल डिनर खाने जा रहे हैं, अभी बहुत सीरियस बातें चल रही है, तो वहाँ मेस में मिलते हैं। चलो अभी कंटिन्यू करो। हाँ